Assalamu alaikum. We are here with the topic. Basically, just a little bit of derivation. Prove that the lambda is equal to the inverse of theta. So first of all, we have to discuss that what is lambda, what is theta, and many of the viewers and many of the students know that what is the lambda, what is the theta. Basically, these are two different variables, two choice variables in the problem of the utility maximization and the expenditure minimization. We discuss one by one. First of all, we make the Lagrange multiplier for the utility maximization. So what is the basically difference, in which first of all we take the objective function of the utility, because we want to maximize the utility, and which is subject to budget constraint. Very simple. Then we set up the Lagrange multiplier, and when we set up the Lagrange multiplier, we take the derivative of the Lagrange multiplier with respect to the x, with respect to the y. So when we take the derivative of the Lagrange multiplier equation with respect to x and with respect to y, so it's very well known equations we received, we discussed many times in earlier. This is the partial derivative of the x and minus lambda px. ये very simple. आप अगर उसको कैलकुलस रूल से मल्टीप्लाई डेरिवेटिव लें तो आपको ये दोनों इक्वेशंस जो है वो रिसीव हो जाएंगी. इसके बाद जो हमने डिस्कस किया था इससे पिछले वाले लेक्चर में भी, और हम दोबारा इस बात को बताते हैं कि इफ़ यू आर टेकिंग द लेट्स सपोज डेरिवेशन इक्वेशन ए, so what is basically the lambda? Lambda is equal to change in utility with respect to change in utility with respect to their price. So the change in the commodity, the utility of the commodity X, if we are taking the ratio with respect to their price, so this is the lambda. Now we stop this discussion here and we say that this is the case of the Lagrange multiplier of the utility maximization. Now we have to move on. Another case is the expenditure minimization. What happens in the expenditure minimization? Our case of the problem has been reversed और हमारा ऑब्जेक्टिव बदल जाता है. हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लेते हैं अपने इनकम फंक्शन को, इनकम कंस्ट्रेंट को. एक्सपेंडिचर फंक्शन इज ऑब्जेक्टिव, सो वी वांट टू मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर. So objective function is the expenditure function, and now we want to minimize the expenditure with the constraint of the utility. तो subject to utility बन जाएगा. And if we perform this exercise, very simple. So what happens कि अगर मैं एक Lagrange multiplier में, जैसे वहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन इधर आ गया, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट है तो वो पहले आ गई, एंड हमने यूटिलिटी माइनस, क्योंकि ये कॉस्टली यूटिलिटी है, और उसको उसके फंक्शन से डिवाइड कर दिया. सिमिलरली अगेन टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू द कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई, सो वी गॉट द इक्वेशन ए एंड बी. यहाँ तक हम पहले भी चीज़ें कर चुके हैं, ये वर्ड सिंपल है. देन अगेन वी want to analyze these equations in a different angle. That's mean if we are taking the equation A, so the theta is equal to the px over ux. So what we basically observed that ke theta or lambda, theta is used in the expenditure minimization problem and lambda is used in the utility maximization problem. The concept is that the question is that we have to show that the lambda of the utility maximization problem is equal to the inverse of the theta in the expenditure minimization, कि उसके वो इन्वर्स होता है. आपको इस बात को शो करना है, सो हमने ये दोनों प्रॉब्लम्स को रन किया और दोनों को हमने कैलकुलेट कर लिया. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यही बात आ रही है, लेकिन उसकी सिर्फ और सिर्फ प्राइस और चेंज यूटिलिटी एक्स का जो रेशो है वो इन्वर्स पोजीशन पे है. सो
if we want to prove this equation, so we may say that if the lambda is equal to the 1 over theta, and if we plug the value of the theta here and lambda here, so we may say that the 1 over px ux, and if the lambda is equal to ux over px, so again hence proved the both is the same thing, and it proves that the theta is basically the inverse form of the lambda, or we may say that the lambda is equal to the inverse form of the theta. So this is basically the show that कि दोनों इक्वेशन में जो हमारे चॉइस वेरिएबल होता है ये किस तरह से बिहेव करता है. Now we want to move another interpretation of this thing. So we discussed in the interpretation of the lambda, we recall the earlier lecture. So we may say that it is basically says that the lambda is equal to change in utility with respect to change in income. ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन हमने निकाली थी पहले लेक्चर में. अब हम इसके लिए सेपरेट लेक्चर नहीं करना चाहते, इस पर हम आपको इससे ड्राइव करके एक कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं कि थीटा के केस में क्या होता है. सो लैम्डा आपको बता रहा है कि कंज्यूमर की यूटिलिटी में कितना फ़र्क पड़ता है अगर उसकी इनकम में तब्दीली वाक़ हो. तो the next question will arise in your mind that what is the theta, and if we have observed that the theta is the inverse relationship, so we may say that this is basically the change in income with respect to change in utility. And now we do not use the sign of the v because due to distinctionness we will say that the u. अब हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर हमने क्या किया था. Basically first of all we discussed the marginal demand function, then we plug into the utility function to make it the indirect utility function, and then we take the chain rule of the indirect utility function with respect to the m, and then we derive this equation. But here we will have a different thing because here objective function is the income. So we will have a basically Hicksian demand function because ये compensated demand function है. यहाँ पर हमें more respect देनी है utility को. We are saying that the consumers की utility को change नहीं करना, तो आपको कितनी जो है वो इनकम में इजाफा करना पड़ेगा. यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि इनकम फिक्स होती है. देखिए यहाँ पे इनकम कंस्ट्रेंट इनकम है, यहाँ पर कंस्ट्रेंट यूटिलिटी है, तो यहाँ पर रिवर्स होगा. सिंपल वी विल डिस्कस द हिक्सियन डिमांड फंक्शन, देन वी विल प्लग इनटू द एक्सपेंडिचर फंक्शन एंड टू मेक इट द बेसिकली द एक्सपेंडिचर फंक्शन. और एक्सपेंडिचर फंक्शन जब आप बना लेंगे तो अगेन उसका जब आप चेन रूल लेंगे तो आपको ये चीज़ ड्राइव हो जाएगी और आपको ये आ जाएगा. लेकिन इंटरप्रिटेशन क्या बनेगी, जिससे वहाँ पर हम ये कहते हैं कि इनकम में चेंज होने से कंज्यूमर की यूटिलिटी में कितना फ़र्क आएगा. तो थीटा इज एक्सप्लेनिंग दैट यस इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर, इफ़ यू वांट टू डिक्रीज द यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर, सो हाउ मच द इनकम शुड बी इंक्रीज और डिक्रीज्ड. So let's suppose if you are saying that if you want to increase the utility, so the change in utility will lead that the how much income should be increased to change that specific utility. So this is the interpretation of the lambda, this is the interpretation of the theta, and we proved that the lambda is equal to the inverse of theta, 1 over theta. And we'll request to subscribe our channel for more videos. Thank you.